नमस्कार। पहली बात मैं भी माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि आपका ट्रैफिक आपको पता है रविवार को भी ज़रा सा ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन मैं खुश हूँ कि आप लोग से मिल सके। मैं तो मुंबई में आया था 24 घंटे के हेक्टिक कैंपेनिंग के लिए। कल बहुत खुशी से मुझे मौका मिला वर्षा गायकवाड़ के साथ और आदित्य ठाकरे जी के साथ रोड शो करने के लिए उनकी कंस्टिट्यूंसी में। बहुत भीड़ थे। मैं बहुत खुश हूँ कि जनता हमारे साथ है, ये क्लियर है। उसके बाद अपना भूषण पाटिल मलाड कांदिवली में जहाँ एक बहुत बड़ा रोड शो कर रहा था, वहाँ जाके उनके साथ रोड शो भी करना, ज़रा सा भाषण देने का मौका मिला कल रात को। आज सुबह एक दो इंटरेक्शन किया हूँ लोगों के साथ, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि राजनीति में हमारे तरफ से सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है। जैसे आप लोग भी चाहेंगे लोगों से बात करके उनकी राय समझना और उनके प्रश्न को जवाब देना बड़ी ज़रूरी है। तो आज सुबह बांद्रा वेस्ट में करीब 350 लोग एक हॉल में थे और उनके प्रश्न और उनको जवाब देने में करीब 2.5 घंटा लगा। उसके बाद जल्दी एक और इंटरैक्टिव लंच खा के मैं अभी आपके साथ आया हूँ। फिर मैं शाम के फ़्लाइट में दिल्ली वापस जा रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि आप लोग को पता है कि इस चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। भारत की आत्मा को सुरक्षित रखने का संघर्ष है। हमें लग रहा है कि जो कुछ 10 साल में हमने देखा, भाजपा सरकार जो भी कर रहे हैं हमारे लोकतंत्रता को खतरे में रखे हैं और हमारे बहुस्वरता, डाइवर्सिटी और सेक्युलरिज्म, इसको आपको पता है कि भाजपा खुले, कोई भी छुपा के नहीं, खुले तरह से हमारे खिलाफ और हमारे संविधान में जो लिखा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। हमारे संविधान कहते हैं, जो अंबेडकर साहब ने हमको संभावना दिया कि अपनी जाति जो भी हो, आपके धर्म की, मज़हब क्यों भी जो भी हो, आपकी भाषा जो भी हो, आप कोई भी राज्य से हो सकते हैं, लेकिन आप भारतीय नागरिक है तो आपको पूरा एक ही हक से इस देश में जीना है। लेकिन ये नहीं भाजपा का सोच। हमने देखा इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कैसे वो नागरिकता के भीतर मजहब का प्रश्न इंजेक्ट किया। और मोदी जी की बातचीत करीब 2 हफ्ते से मुझे ये शर्मनाक लगता है कि एक प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसे लफ्ज़ निकले जो मेरे बचपन में मुंबई में मैं कभी किसी के दरवाज़ा बंद करके उनके घर के अंदर भी सुनेगा नहीं। इस किस्म की बात है आजकल हमारे राजनीति के पब्लिक डिस्कोर्स बन गया है। और मेरे ख्याल में हमारे राजनीति के लिए अच्छा नहीं है, हमारे देश के लिए भी अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि इस चुनाव में कि हम भाजपा को दिल्ली सरकार से हटा के, कि हम सबको लेके आने के, एक साथ लेके आके इकट्ठे करके प्रगति करने के लिए, एन इंक्लूसिव इंडिया, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। An inclusive India of all religions, all languages, all castes, all regions, all states. We want to see, and poor and rich and women and men and youth and farmers, everybody, labor, everybody should be given an opportunity in this country. So I'm here to say that we stand for a very different conception of India, a very different idea of India from what the BJP represents. And that's why this election is very important. I'm very pleased to say that the first 3 phases, ये पहले 3 चरण जो हम देखे हैं, हमें लग रहा है कि हवा बदल रहा है। और ये भी मैं कहूँगा कि जो हम देख रहे हैं सिर्फ दक्षिण भारत की बात नहीं। मैं तो दक्षिण में उम्मीदवार था। 26 अप्रैल में मेरे वोट के बाद मैं करीब 8 राज्यों में जाके प्रचार किया हूँ। मैं हर जगह में जो देख रहा हूँ, मुझे बहुत आत्मविश्वास बढ़ गया है कि जून 4 को हम सरकार को बदल सकेंगे। I'm going to stop there. I'll be very happy to take your questions in Hindi or English. But I just want to end by saying, मुंबई 20 तारीख को वोट करेंगे और हम चाहते हैं कि इस नगर का जो एसेंशियल कैरेक्टर है, मैं भी मेरे बचपन यहाँ कुछ साल गुजरे, करीब 8-9 साल। मुझे मालूम है कि भाजपा को कभी समझ नहीं पाया the cosmopolitanism of Mumbai. That is also at stake.
And I hope that the voters of Mumbai will come forward to defend their own essential character and to work with us to vote for a better India, an India that everybody can be proud of, be a shareholder of, a stakeholder of, and an India where all of us will march together, हाथ में हाथ जुड़ा के, कदम से कदम जुड़ा के हम आगे बढ़ना चाहेंगे सब लोग के साथ। असलियत की सबके साथ सबका विकास हमारी राजनीति में है और उनके नहीं। 10 साल तक अच्छे दिन नहीं देख पाया, अब हम उनके लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम सिर्फ ये कहेंगे कि भारत की प्रगति के लिए हमें वोट दे दीजिए हाथ पे। ये कहने के लिए मैं आया हूँ और जो भी मैं देख रहा हूँ पूरे देश में मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। I'll take your questions now. Floor is yours. Congress has been given the categorization of a doormat in Maharashtra politics, where the Mahavikas Aghadi, especially for parties like the Uddhav Balachandra Thackeray as well as Sharad Pawar faction, it is said that they don't consider Congress as a part of, as a strong party. I don't agree with that at all. In fact, to show magnanimity, show big-heartedness is not the sign of a doormat. This is a party that has said, we have the larger picture in mind. We are thinking of the country first. And where we have a coalition arrangement, we believe that making concessions in the interests of the larger alliance is not a defeat or a surrender. It is a sign of large-heartedness, a willingness to accommodate, and a willingness to move forward. So I am very happy that we have two strong allies. In fact, yesterday at Varsha Gaikwad's rally, it was impressive to see the Shiv Sena out in great strength, great numbers, including Aditya himself on the vehicle with us. Similarly, even for Bhushan Patil's roadshow, our allies are there with us. They are standing by us, they're standing along with us, and it's because they see mutual respect. In BJP's NDA, there is no mutual respect. And that's why when embarrassingly, almost humiliatingly, Mr. Modi went after the Akali Dal and the BJD, both parties spurned him and said, no, we would prefer to contest on our own. That's because they've seen the experience of what it is like to work with the BJP. Whereas we believe that the parties whom we have shown respect to, they will show us respect when the time comes to form the coalition government of India after the 4th of June. So you were talking about coalition government. What is your PM candidate? Who will be the face of... That is going to emerge from the coalition, my dear lady. We are not talking about a presidential system in our country. I'm sorry to say Mr. Modi is running the parliamentary system presidentially, which is the worst of both worlds. In a parliamentary system, and those of you who have studied politics around the world, you know this, is that in a parliamentary system, you vote not for an individual, you vote for parties, ideologies, principles, and policies. And at the end of all of that, what happens is that the victorious parties will come together and identify a suitable leader that enjoys the support of all of them, probably based on a common minimum program. And at the same time, as we saw in 2004, we may get a very successful result. Dr. Manmohan Singh ran an excellent coalition government for 10 years. Even though I say it, I'll say Mr. Vajpayee did a very good job of managing a 26-party coalition for 6 years. So coalition governments are nothing for the country to worry about. They are, in fact, the track record of coalition governments in India shows that economic growth has been better under coalition governments than under single-party governments. So I will say that we are not at all worried about this. There will be a Prime Minister, but that Prime Minister will function collegially as a first among equals. And I have no concern at all in my mind. In fact, I think, again, as I said, like 2004, some parties that have campaigned alongside us in the election and some parties that have campaigned against us or separately from us in the election will all come together in the larger interest of stopping the BJP and the NDA coming back. Rahul Gandhi has challenged PM Modi and asked him for a face-off, for a debate. What's your take on it? I think, frankly, it's important for the nation to realize that what we have in this country is a Prime Minister who has never held an open press conference in his entire life. He used to call our Prime Minister Manmohan Singh. But Dr. Manmohan Singh not only held 3 or 4 press conferences every year in Delhi, every foreign trip he took, he held an impromptu press conference on the plane.
where the journalists could ask him anything they like. That is true democracy. That is accountability of the elected leadership to the people. Other than scripted interviews on television where everything is already pre-arranged with very sympathetic interviewers, where have you seen Mr. Modi answering completely unprepared, unscripted questions spontaneously? So when three people, two retired justices and one senior editor, wrote to both sides saying, please participate in the debate, answer the nation's questions and answer each other's questions, Rahul Gandhi immediately replied saying either he or the Congress president would be happy to do so. But Mr. Modi has not replied. And I'm convinced that if Mr. Modi replies, we will have a very good discussion because we know what we're talking about. The Congress party, the president, as well as the former president, the leader, know what the issues are. And they're very willing to confront Mr. Modi on these issues. I don't know how much Mr. Modi is going to be able to do without a script in front of him, without a teleprompter in front of him. Yeah. Zara sa awaaz badhana. Here from the Hindu. Huh. So I just wanted to ask you, Bombay has been a bastion of Shiv Sena. Yeah. And you were Congress was considered as an arch rival. Yes. This is for the first time you guys are coming together. Do you think the vote for Shiv Sena, is the Congress concerned about the Shiv Sena vote? You mean the transferability of votes? No, I think we rely on the Shiv Sena, which has a tight organizational structure, to